This video lecture is for class 7, subject science. Mainly there are three sections in science: biology, chemistry and physics. So generally physics part थोड़ा सा difficult माना जाता है. फिजिक्स पार्ट में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा होता है. So I would like to start first chapter of physics part, and according to book, this is chapter number 12. The name of the chapter is motion and time. So I will give basic idea. When school will reopen, you will get the details. So try to understand the basic concept of this chapter. Okay, I'm going to start. So mainly time is measured. We need unit. Time is actually physical quantity. Physical quantity means which is measured. There are so many physical quantity. Physical quantity means the quantity which is measured in daily life. For example, mass, time, temperature, length, area, volume. These are called physical quantity. Time is also basic fundamental physical quantity. And to represent any physical quantity meaningfully, we need unit. So we have unit for measurement of time. For example, we have 1 hour. So 1 hour. Suppose we have 1 day. 1 day is equal to 24 hours. You also know about it. And 1 hour is equal to 60 minutes. Important. 60 minutes. We need to convert hour to minute, minute to second. So 1 minute is equal to 60 seconds. 60 seconds. And 1 hour is equal to how many seconds? 60 into 60, 3600 seconds. So basically आपको इतना आना चाहिए कि आवर में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और मिनट में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेकंड में दिया है तो आवर में कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो दिस ऑल अबाउट द सेकंड टाइम, measurement of time. And we have another physical quantity here important, which is called distance. Distance and similar terms. We have another similar terms that is called displacement. The unit is same, distance and displacement. Unit is same, but in physics, language of physics, distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Again I repeat, distance is a scalar quantity. Scalar means no need of direction. Direction is not meaningful here. We need only the value. And displacement means we have a direction. We have a direction. That is a vector quantity. Both direction as well as value is important. For example, a body is moving, start moving from here and again come back here. So in the language of science or physics, here displacement is 0 because the body having same initial and final point. Very important. But distance, we have a distance because distance, the direction is not important here. Distance means perimeter, circumference of the circle. So you will get details about this in higher classes. So displacement and distance. Distance is a scalar quantity. Displacement is vector quantity. Both having same unit. So generally the long distance measurement we use kilometer unit for measurement of distance or displacement. And meter is standard unit,
centimeter is also there. So I would like to give the relation. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. अगर आपको किलोमीटर में दिया है तो मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए. सपोज 10 किलोमीटर, so we have to convert into meters. So 10 into what? 1000. It means 10,000 meter. 10 kilometer is equal to 10,000 meter. सपोज आपको आगे जाके पढ़ना है स्पीड, वेलोसिटी. द स्पीड मीन्स रेट ऑफ डिस्टेंस, मीन्स 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. सो सपोज a body is moving 20 किलोमीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर मूव कर रहा है 20. कभी कभी 20 मीटर पर सेकेंड में भी दे सकते हैं. सो 20 मीटर पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर हो रहा है. जैसे कभी कभी कोई बॉडी का ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड होता है, जैसे रॉकेट का स्पीड होता है. हाँ, एक रॉकेट का किसी रॉकेट का स्पीड होता है 10 किलोमीटर पर सेकेंड. जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल. अप्रोक्सीमेटली उतना नहीं भी, अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है. सो उस केस में हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में यूज करते हैं. जैसे स्पीड ऑफ कार, हाँ, हम लोग मीटर पर सेकेंड में जनरली लेते हैं. साइकिल का स्पीड मीटर पर सेकेंड में लेते हैं. तो हम लोग कन्वर्ट करना आना चाहिए. आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहिए. मीटर पर सेकेंड में दिया है तो किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए. किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना आना चाहिए. सो इस क्लास में आप टाइम का बारे में जितना मैंने सिखाया उतना सीखिए. डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, उसके यूनिट क्या है. यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तीनों का रिलेशन आप सीखिए. नेक्स्ट क्लास में स्पीड, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते आई विल टीच यू, एंड लेटर ऑन यू विल गेट इक्वेशन, फॉर्मूलाज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का भी बहुत सारा भाग होगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन. सो ये स्टार्टिंग है, इसका जर्नी बहुत आगे तक है. अब जब अभी आप क्लास 7 में हो, 7 में तो यू विल गेट द बेसिक आइडिया. लेकिन जैसे 7 का साथ लिंक होता है 9 का साथ लिंक होता है 11 में. जब आप 11 क्लास में जाएंगे तो ये सब बहुत डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा. हार्ड न्यूमेरिकल आता है. एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिकली सीखना है. तो आपको अभी एनफ टाइम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, और जितना हो सके कैलकुलेशन पार्ट को आप पूरा केयरफुली कीजिए. और फिजिक्स को लव करना है, साइंस आप दिल से लेना है. जब तक आप दिल से नहीं लेंगे, सिर्फ खाली करियर के लिए सोचेंगे तो नहीं होगा. आपको इसका अनुभव होना है, आप फीलिंग्स होना है नॉलेज का, तब जाके आप अच्छा करेंगे आगे जाके. नहीं तो कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है. आज के लिए इतना ही है, इतना क्लियर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.